Next, an oxide of iron dissolved in an inert solvent is electrolyzed for 2 hours using a current of 0.8 amperes. The electrolysis products are iron and oxygen. The mass of iron produces 1.11 grams. Calculate the oxidation number of iron in the oxide of iron. Show all your working. So this equation is Fe n positive plus n moles of electrons gives Fe. So when n into 96,500 coulombs are passed, it deposits the AR value of iron, which is 55.8. So the charge passed would be 0.8 into 2 into 60 into 60. 0.8 जो है वो current है, 2 hours हैं, 60 minutes और 60 seconds हैं. When these many coulombs will be passed, the mass deposited would be 1.11 grams. So in order to calculate N, we rearrange this. This will become 55.8 divided by 1.11 multiplied by, now this value, 0.8 into 2 into 60 into 60. 0.8 into 2 into 60 into 60 is 5760. 5760 coulombs, right? So 5760 equals n into 96,500. तो अब इसको सॉल्व करेंगे 5760 into 55.8 divided by 1.11 gives us 2.90 into 10 to the power of 5. This is equal to n into 96,500. So n would be equal to 2.90 into 10 to the power of 5 divided by 96,500. तो इसको जब आप divide by 96,500 करेंगे तो the answer we get is equal to 3. So the oxidation number of iron in this is +3. याद रखना पॉजिटिव साइन डालना जरूरी है. इट्स अ मेटल आयन, राइट? सो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ऑल्दो इन्होंने पूछी नहीं है बट ये N3 है तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe. Next, dilute sulfuric acid is electrolyzed for 50 minutes using inert electrodes and a current of 1.2 amperes. A different gas is collected above each electrode. The volume of the two gases are measured under room conditions. Calculate the maximum volume of gas that could be collected at the cathode. अच्छा, dilute sulfuric acid के electrolysis का मतलब होता है electrolysis of water. ठीक है, कैथोड पे प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन होती है 2H positive plus 2 electrons gives H2 gas. तो इन्होंने क्या बोला है, अंडर रूम कंडीशन है. ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कुड बी कलेक्टेड एट द कैथोड. So 2 into 96,500 coulombs when passed would produce 24,000 centimeter cube of hydrogen, because 1 mole of gas at RTP, 1 mole of any gas at RTP occupies a volume of 24,000 centimeter cube or 24 dm cube. यहाँ पे जो फाइनल यूनिट्स हैं उसमें cm cube लिखा है तो हम यहाँ पे cm cube लिखेंगे. So 2 into 96,500 would produce 24,000 cm cube. How many coulombs were passed? A current of 1.2 amperes was passed for 50 minutes. So 50 into 60. So this would produce what volume of hydrogen gas? So calculation would be 1.2 into 50 into 60 divided by 2 into 96,500 multiplied by 24,000. This calculation would give us the volume of hydrogen produced. So the answer calculated here is 447.66 cm cube. अगर इसको whole number में round करें तो this becomes 448 centimeter cube of hydrogen gas being produced. अगर आपसे पूछा जाता कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे, तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो
2:1 होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इक्वेशन है उसमें 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ 2 मोल्स है, तो हाइड्रोजन जितनी प्रोड्यूस होगी उसकी आधा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो at the same current at the same time when passed, the amount of oxygen produced would be half of 448, which is 224 cm cube of O2 also produced. इन्होंने ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे निकलवाएं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बिकॉज हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है उसकी आधी वॉल्यूम ऑक्सीजन की प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन Faraday's कांस्टेंट एंड द एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो इक्वेशन होती है F equals LE. F is the Faraday's constant, L is the Avogadro's constant, and E is the charge on an electron. Next, when a current of 1.2 amperes was passed through dilute sulfuric acid for 30 minutes, it was found that 130 cm cube of oxygen measured at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere was collected at the anode. The following reaction takes place. 2H2O liquid gives 4H positive plus O2 plus 4 electrons. तो यहाँ पे 4 Faradays are required to produce 1 mole of oxygen gas. Using the data from the data booklet to calculate a value for the Avogadro's constant by calculating the number of moles of oxygen produced, the number of moles of electrons needed, the number of coulombs passed, the number of electrons passed, and the number of electrons in 1 mole of electrons. That means the Avogadro's number. ठीक है, तो ये डेटा हमें यूज करके ये सारी चीजें निकालनी है। Okay, now in order to calculate this, current is 1.2 amperes, time is 30 minutes, and volume of oxygen produced is 130 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेटा है जो हमें चाहिए होगा along with all of this। अब वन बाय वन यहाँ करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो है, क्योंकि ये जो सब कैलकुलेशन है ये एट आरटीपी है, तो 1 mole of any gas at RTP occupies a volume of 24 dm cube, या यहाँ पे cm cube है तो 24,000 cm cube. So number of moles of oxygen would be 130 divided by 24,000, और 130 divided by 24,000 gives us 5.42 into 10 to the power of -3 moles। तो ये आंसर हो गया आपका पहले रिक्वायरमेंट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर दिस। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इक्वेशन देखो तो 1:4 का रेशियो है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी 4 into 5.42 into 10 to the power of -3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर आएगा 2.17 10 पावर -2 मोल्स। तो ये आ गए आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड। नेक्स्ट दे वांट यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स पास्ड। तो नंबर ऑफ कूलम्स पास्ड में आप जो है वो यूज करोगे जो डेटा इन्होंने गिवन था। आपका करंट इज 1.2 एम्पियर्स, आपका टाइम इज 30 मिनट्स, तो 1.2 into 30 into 60, तो 1.2 into 30 into 60 gives us a value of 2160 coulombs। So 2160 coulombs when passed produced 130 cm cube of oxygen gas। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, अब आपको पता है फॉर्मूला जो है वो है चार्ज इक्वल्स एवोगाड्रोस नंबर इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। F इक्वल्स टू एल वाला जो फॉर्मूला है वही हम लोग यहाँ मैनिपुलेट करके यूज करेंगे। कैसे, अब चार्ज Q इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, N इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब क्योंकि पर मोल नहीं है इसलिए हमने फैराडे नहीं लिया,
ये एक मोल की बात नहीं हो रही है। तो Q विल बी चार्ज विच इज 2160। N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 to the power of -19। तो N हो जाएगा यहाँ पे 2160 divided by 1.6 into 10 to the power of -19, which will give us a value of 1.35 into 10 to the power of 22 electrons. Number of moles of electrons है ना, so this will give us a value for the number of electrons. ये हो गया आपका फोर्थ रिक्वायरमेंट। तो so far number of moles of oxygen produced, number of moles of electrons needed, the number of coulombs passed और number of electrons passed, ये चार चीजें निकालनी है। अब बारी आई है the number of electrons in 1 mole of electrons। तो number of electrons in 1 mole of electrons निकालने के लिए moles of electrons हमारे पास आ गया है, जो कि हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ग्रीन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रहा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने मोल्स में होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल में होंगे, राइट? ये हमारी कैलकुलेशन होगी। सो 1.35 इंटू 10 to the power of 22 electrons are present in 2.17 into 10 to the power of -2 moles. How many electrons would be present in 1 mole? क्योंकि इन्होंने बोला 1 mole of electrons, या Avogadro's number। तो this will be 1 divided by 2.17 into 10 to the power of -2 multiplied by 1.35 into 10 to the power of 22। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 6.22 into 10 to the power of 23। So our experimental value of the Avogadro's constant is 6.22 into 10 to the power of 23। This is the experimental value for the Avogadro's constant। So जो fifth requirement है वो भी पूरी हुई। And that is how you use experimental data to find the value of the Avogadro's constant when everything else that was used during the experiment has been stated for you।